Hello my dear students, I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to learn chapter 16 part 1. First of all, we discuss some important notes about speed. What is speed? Speed is the distance traveled by an object in a unit time. That means यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम स्पीड बोलेंगे. इन सिंपल वर्ड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. नेक्स्ट वी यूज सिंबल S for speed, D for distance and T for time. So we have formula S is equal to D upon T. Next, speed is generally measured in kilometer per hour or meter per second. Next, finding distance when speed and time are known. That means अगर speed and time known है and distance unknown है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे distance is equal to speed multiply by time और t is equal to s multiply by t. Next, finding time when distance and speed are known. That means अगर distance and speed known है and time unknown है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे time is equal to distance upon speed और t is equal to t upon s. Next, remember, first, if the speed is expressed in meter per second, distance has to be in meter and time has to be in second. दैट मीन्स अगर स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में मेज़र करेंगे तो डिस्टेंस मीटर में है एंड टाइम सेकंड में है. नेक्स्ट, सेकंड, इफ द स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हैज़ टू बी इन किलोमीटर एंड टाइम हैज़ टू बी इन आवर. दैट मीन्स अगर स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में मेज़र किया है तो डिस्टेंस किलोमीटर में है एंड टाइम आवर्स में है. Now we are going to start activity 1, which is based on speed, distance and time. First, we solve question number 1. Complete the following tables. We complete this table by finding unknown values. First, distance t is equal to 120 meter and time taken t is equal to 20 seconds and we want to find speed s. According to formula, s is equal to d upon t. We put the value of d and t in this formula. We get 120 upon 20. Here we observe that 20 is a common factor of 120 and 20. तो हम दोनों को 20 से डिवाइड करेंगे. 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 6 एंड 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1. सो वी गेट 6 upon 1 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे आएगा 6 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, सेकेंड, डिस्टेंस t इज इक्वल टू 420 मीटर, स्पीड इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड एंड वी वांट टू फाइंड टाइम. t इज इक्वल टू 420 मीटर, t हमें फाइंड करना है एंड s इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, t इज इक्वल टू d अपॉन s एंड दिस इज इक्वल टू 420 अपॉन 14 सेकेंड. बिकॉज स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम यहाँ पे सेकेंड में होगा. On dividing 420 by 14, we get answer 30
सेकेंड। सो यहाँ पे आएगा 30 सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड, इन थर्ड वी हैव टाइम टेकन, स्पीड and we want to find distance. So T is equal to 8 hours, S is equal to 65 kilometer per hours. According to formula we have D is equal to S multiplied by T. We put the value of S and T in this formula. We get 8 multiplied by 65 kilometer. On multiplication, we get answer 520 kilometer. So हम यहाँ पे पुट करेंगे 520 kilometer. Remaining 3 you will do in your homework. Question number 2. Find the speed in each case. A train covers 300 km in 4 hours. First of all, we write what we have. Distance D is equal to 300 km. Time T is equal to 4 hours. And we want to find speed S. According to formula we have S is equal to D upon T. We put the value of D and T in this formula. We get 300 upon 4. And हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 300 एंड 4. तो दोनों को हम 4 से डिवाइड करेंगे. 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 75 एंड 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1. सो वी गेट 75 अपॉन 1 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर. Next, C. A car covers 54 km in 3 hours. That means यहाँ पे दिया गया है कि कार 3 hours में 54 km कवर करती है. So here given that distance D is equal to 54 km and time taken is equal to 3 hours. And we want to find speed S. As we know that speed is equal to distance covered upon time taken. We put the value of distance and time in this formula. We have 54 upon 3. As we know that 3 is a common factor of 3 and 54. So we divide both by 3 and we get quotient 18 and 1. So, final answer is 18 km per hour. Remaining sums B and D you will do in your homework. Question number 3. Find the distance covered in each of the following cases. A train is traveling at a speed of 90 km per hour for 8 hours. That means यहाँ पे ट्रेन की स्पीड एंड टाइम गिवन है एंड हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. हियर गिवन दैट स्पीड एस इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टी इज इक्वल टू 8 hours and we want to find distance d. As we know that d is equal to s multiplied by t. This is equal to 90 multiplied by 8 kilometer. 9 8s are 72 and we add 0 at rightmost place. So we get 720 kilometer. Therefore, train covers
720 kilometer. Next B, a man is driving at a speed of 35 km per hour for 7 hours. तो यहाँ पे speed and time given है and distance find करना है. Here given that speed s is equal to 35 km per hour and time t is equal to 7 hours, and we want to find distance d. As we know that d is equal to s multiplied by t. We put the value of s and t in this formula. We get 35 multiplied by 7 kilometer. So 7 5s are 35, carry on 3. 7 3s are 21, 21 plus 3, 24. Therefore, distance covered by man is 245 kilometer. Next, question number 4. If a train covers 625 kilometer in 7 hours, find its speed. That means train 7 hours में 625 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो हमें स्पीड फाइंड करना है. फॉर दैट वी यूज फॉर्मूला s इज इक्वल टू d upon t. This is do in your homework. Next, we solve question number 5. If a car runs at a speed of 85 km per hour, how much time will it take to cover a distance of 382.5 km? That means car 85 km per hour की स्पीड पे 882.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है. हियर गिवन दैट स्पीड s इज इक्वल टू 85 किलोमीटर पर आवर and distance t is equal to 382.5 kilometer, and we want to find time t. Therefore, time taken is equal to d upon s. This is equal to 382.5 upon 85. On dividing 382.5 by 85, we get 4.5 hours. So, the train will take 4.5 hours to cover the distance. Question number 6. An aeroplane fly at a speed of 630 km per hour for 2.5 hours. How much distance does the aeroplane cover in 2.5 hours? That means एरोप्लेन ने 630 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 2.5 आवर्स तक फ्लाई किया, तो एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. Here given that speed s is equal to 630 kilometer per hour, time t is equal to 2.5 hours, and we have to find distance t. Therefore,
distance d is equal to s multiply by t। यहाँ पे s है 630 एंड टाइम है 2.5। Product of 630 and 2.5 is 1575 kilometer. Hence, the aeroplane will cover a distance of 1575 kilometer. Next, question number 7. A car covers a distance of 675 km at a speed of 25 km per hour. How long did the journey take? That means कार ने 25 km per hour की स्पीड पे 675 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कार को कितना टाइम चाहिए, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर दैट वी यूज फॉर्मूला ऑफ टाइम t इज इक्वल टू d अपॉन s। दिस इज डू इन योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ कार ट्रैवल्स 156 किलोमीटर इन 4 hours while a bus covers 140 kilometer in 3 hours. Which is running faster? That means कार 156 किलोमीटर 4 आवर में कवर करती है एंड बस 140 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर करती है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो फॉर अ कार डिस्टेंस d is equal to 156 kilometer and time taken is equal to 4 hours. And we want to find speed. So speed of car is equal to distance covered upon time taken. This is equal to 156 upon 4. On dividing 156 by 4, we get answer 39 kilometer per hour. Next, we find for bus. For bus, distance t is equal to 140 kilometer and time t is equal to 3 hours. So speed of the bus is equal to distance covered upon time taken. तो यहाँ पे डिस्टेंस है 140 एंड टाइम है 3। तो 140 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 46.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें बस की स्पीड मिली है 46.6 किलोमीटर पर आवर। So the speed of the bus is greater than car. So the bus is
running faster. Here we completed the activity 1 of chapter 16. Thank you one and all.